Dear students, in last video we have discussed general features of class chondrichthyes, and you all know that members of chondrichthyes are commonly known as cartilaginous fishes. Now in this video we will discuss general features of next class, and that is osteochthyes, and members of class osteochthyes are commonly known as bony fishes. And when we are going to finish with the general features of these bony fishes, we are also going to compare between the bony and cartilaginous fishes in this video. So now let's start with first of all the general features of the class osteochthyes. This is the body outline of a bony fish. You can see the body is streamlined. आप देख सकते हो इसकी शेप कैसी है? The body is streamlined and its anterior and its posterior ends are pointed. This helps this fish to move freely inside the water and to prevent the water resistance. क्योंकि ये आगे से tapering हो जाते हैं, इनके एंड पॉइंटेड होते हैं, इस वजह से ये आसानी से वाटर में मूव कर सकते हैं and they can prevent easily the water resistance. So they have this streamlined body. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो माउथ की पोजीशन है, द माउथ इज टर्मिनल. डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर इक्वल एंड दैट्स व्हाई दिस स्लिट, ये जो आपको यहाँ पर स्लिट दिखाई दे रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स माउथ एंड माउथ इज टर्मिनल here in this case of bony fishes. Next feature is you can see that their body is covered by these scale like structures. This scales are of two types in case of bony fishes. The body is covered by the exoskeleton made up of scales, and scales are of two types, gynoid scales and ctenoid type of scales. Okay. Now because they are aquatic animals, so they will require the presence of gill. Gills are the respiratory organs. So here you can see that at its anterior end, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर ये कुछ एरिया दिखाया गया है. This area is actually the flap. एक ये कवर जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, and this cover is known as operculum here. और इस operculum के नीचे gills होते हैं. Means the gills are covered in case of bony fishes. And there are 4 pairs of gills in bony fishes. 4 गिल्स यहाँ पर हैं, 4 जो है गिल्स वो इसके दूसरी तरफ मिलेंगे, लेकिन खासियत ये है, स्पेशलिटी यहाँ पर ये है, द गिल्स आर 4 पेयर्स इन नंबर एंड दे आर कवर्ड बाय operculum. Okay, now let's see about their fins, the flap like structures that help this fish to move in the water. तो सबसे पहले आप देखिए इसका कॉर्डल फिन. कॉर्डल फिन यहाँ पर यानी इसका जो टेल फिन है या कॉर्डल फिन है, ये सिमेट्रिक नजर आ रहा है. द सिमेट्रिक फिन इज नोन एज होमोसर्कल. मींस द fins of caudal fin of the bony fish is homocircle in nature or symmetric in nature. Now let's see its dorsal fin. यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी पे आपको सिर्फ एक डोर्सल फिन नजर आ रहा है. डोर्सल सरफेस पर सिर्फ एक फिन है यहाँ पर, डोर्सल फिन. एंड यहाँ पर आप देखिए पेक्टोरल फिन इज located toward the anterior side and also the pelvic fin is also toward this anterior end. बिल्कुल इसके आसपास ही pelvic fin है, तो आप कह सकते हैं the pelvic fin is anterior in location. और बिल्कुल pelvic fin के बाद आपको यहाँ पर एक anal fin दिखाई दे रहा है. Now why we are calling them the bony fishes? Because their endoskeleton is bony in nature. They have bones inside them. The body is supported or shaped by the bone tissue. So they have endoskeleton bone in nature. That's why they are known as bony fishes. Next thing is about them is they don't have notochord in their life. They have just it in their embryonic phase, but in adult stage, or means after completion of their embryonic stage, they are not having any type of notochord structure
means they don't have any reduced notochord, or it is completely replaced by the vertebral column here. So their cranium and the vertebral column both are bony in nature. यहाँ पर आपको एक डोर्सल सरफेस पर, ये इसका डोर्सल एरिया है, डोर्सल सरफेस पे आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है. दिस ओपनिंग इज द नेरेस ओपनिंग है जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है, एंड दिस इज डोर्सल इन पोजीशन. Now if we talk about their sexes, then we can say sexes are separate, male and female fishes are they are male and female gametes are produced by two different bodies, but they don't possess any type of sexual dimorphism. आप उन्हें एक्सटर्नली या किसी मॉर्फोलॉजिकल फीचर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल फिश है या फीमेल फिश है. Their fertilization process is external, means they will release their gametes outside the body, and the fertilization will take place inside the water, not inside the female body. And they are oviparous. They are egg-laying type of organisms. They have swim bladder or air bladder. Air bladder is the specialized structures having air filled inside it, and they can adjust the buoyancy, they can regulate the buoyancy with the help of this air bladder. So they don't need to swim continuously in the water. They can stand in the water, they can move inside the water as according to their will. So they have swim bladder or air bladder. Next feature can be they have two chambered heart. Only two chambers are present in their heart. One is auricle, other is ventricle, and they are cold blooded, means they are poikilothermous type of organisms. Okay, so these are the general features of these fishes, bony fishes. Now let's have some examples like Exosiotus. This is known as flying fish. Hippocampus, which is known as sea horse. Both Exosiotus and Hippocampus, they are marine water forms, marine fishes. While if we are going to give examples of freshwater fish, they are the labio, which is commonly known as the rohu fish, and Katla, which is also commonly called as Katla. And there is Clarias, which is commonly known as Maguar. So the freshwater forms are labio, Katla, and Clarias, while the marine forms are Exosiotus and Hippocampus. Now there are two aquarium fishes, means they are suitable to keep in the aquarium also. There are betta fish, which is known as flying fish, and Pterophyllum, which is commonly known as angel fish. So these are the few examples of the bony fish class. Now let's compare these bony fishes with that of cartilaginous fishes. यहाँ पर ये डायग्राम bony fish का बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर से कंपैरिजन के लिए हमने cartilaginous fish को भी दिखाया है. Now let's compare these two types of fishes. सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर बॉडी दोनों में स्ट्रीमलाइन दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज में जो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट्स होते हैं, जैसे टॉर्पीडो या ट्राइपोड. तो इसमें जो है जरूरी नहीं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपको फिशेज स्ट्रीमलाइन बॉडी के दिखाई दे रही है. Now let's talk about their mouth position. यहाँ पर आप देखिए, mouth of this fish, bony fish is terminal, while mouth of the cartilaginous fishes is ventral in position. It is ventral and here it is terminal. यहाँ पे जो आपको नेरेस दिखाई दे रहा है, जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये डोर्सल है, मींस इसके अपर सरफेस के पास है, डोर्सल सरफेस से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर नेरेस वेंट्रल पोजीशन में होता है. वेंट्रल position nares are present. Their
That's why they are called as bony fishes. And here their endoskeleton is made up of cartilage. Notochord is present which is highly reduced in these cases. नोटोकॉर्ड जो इनके एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद भी इनमें परसिस्ट करती है लेकिन वो रिड्यूस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी. The notochord is present only in the embryonic stage and it will be completely replaced by the vertebral column. Now come to their scales. यहाँ पर अभी आपसे बात हुई कि the scales are of gynoid and ctenoid type of scales. लेकिन यहाँ पर इनके जो स्केल्स होते हैं, जो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल्स. प्लेकोइड ये मैरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स दोनों ही रिपोर्ट की जाती हैं. यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनके मेजॉरिटी जो मेंबर्स की है वो मैरीन फॉर्म्स की है. दे आर मोस्टली मैरीन इन नेचर. Let's compare their fins. आप देखिए इसका caudal fin अभी कहा था कि it is symmetric in nature, but यहाँ पर इसके fin को आप देखिए caudal fin को it is asymmetric in nature. दोनों fins की जो extension है ये asymmetric होती है और इसीलिए ये heterocircle बोले जाते हैं. यहाँ पर हमने इनको homocircular type of caudal fins कहा था. यहाँ इसके dorsal fin को देखिए. Dorsal fin is single in it is single in these bony fishes, while यहाँ पर आप देख सकते हो there are two dorsal fins. And see the position of the pelvic fin. ये anterior end की तरफ है, जबकि pelvic fin is located in case of cartilaginous fishes towards the posterior end. ये इसका posterior end है तो ये ज़्यादा pelvic fin posterior side है, जबकि यहाँ पे pelvic fin anterior एंड की तरफ लोकेटेड है. एंड पेक्टोरल भी बिल्कुल इसके माउथ की तरफ यहाँ एंटीरियर पोजीशन पर है पेक्टोरल फिन. दोनों में ही पेक्टोरल फिन इज लोकेटेड टुवर्ड द एंटीरियर एंड बट इट इज मोर टुवर्ड द एंटीरियर एंड. नाउ देयर गिल्स, जैसे आपको कहा था कि द बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, लेकिन यहाँ पर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. And here the gills are covered by operculum, but here in this case gills are not covered by any operculum. आपको clear cut slits दिखाई दे रही हैं, they are not covered, लेकिन यहाँ पे आपको gills नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो covered हैं. And they are 4 in number. One side आपको 4 दिखाई देंगे, 4 pairs in number. Now if we talk about their sexes, तो दोनों में ही sexes separate जरूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रिपोर्ट किया गया है. मींस द मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस और द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. लाइक इनमें कार्टिलेजिनस फिशेस में मेल मेंबर्स आर क्लैस्पर नियर देयर पेल्विक फिन. तो क्लैस्पर की वजह से बिकॉज दे कैन होल्ड द फीमेल, दिस क्लैस्पर इज the identifying feature of any male cartilaginous fish. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एक्सटर्नल फीचर नहीं होता जिससे हम मेल या फीमेल फिश को आइडेंटिफाई कर सके. ये ओविपेरस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको बताया था they can be ovoviviparous. Ovoviviparous, they can give birth to their young ones, means the eggs will hatch inside their body. There are a number of members in the cartilaginous fishes. Next very important thing is that they have swim bladder or the air bladder which can regulate their buoyancy. So they don't need to continuously swim inside the water, but here in these cartilaginous fishes air bladder is absent. That's why they can't regulate their buoyancy. They have to swim continuously throughout their life without resting. Without which, if they are not going to swim, they will sink to the bottom of the sea. So they have to swim continuously. Okay. So these are the features. And one more thing is that in fishes में, bony fishes में, anus means the जो digestive system की opening जिससे food को अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट किया जाता है, मींस एनएस एंड
opening, and that is the cloaca. Cloaca is present. Common chamber is there in which the digestive system and urinogenital system are opening. So they have a common chamber, cloaca, but cloaca is absent in these bony fishes. So these were some points on the basis of which we can differentiate between bony and cartilaginous fishes. Common features में ये भी they both the type of fishes, they have two chambered head, they are cold blooded, they have streamlined body. A number of features which are common in them because they are placed in a common class species. But because one is cartilaginous fish and other is the bony fish, that's why they have some distinguishing features also that we have discussed. And I hope you all are clear about their features. What is difference between cartilaginous and the bony fishes?